आरबीआई जरूरी जानकारी शेयर कर रहा है, आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे लिए चलते हैं। From July to November 2024, system liquidity as measured by the average net position under the liquidity adjustment facility did turn into a deficit during December 2024 and January 2025. This payments for Q3 that did have an impact. Capital outflows, again, one has witnessed some capital outflows because of various reasons. Forex operations and a significant pickup in currency in circulation as we witness every year in January. It has been, however, I would like to mention over here that we have observed that some banks are reluctant to on-lend in the uncollateralized call money market. They are passively parking funds with the Reserve Bank. I take this opportunity to all the banks to urge them to actively trade amongst themselves in this uncollateralized call money market, so as to make it deeper and vibrant for better signal extraction from the weighted average call money rate. The Reserve Bank is committed. I want to assure everyone that the Reserve Bank is committed to provide sufficient system liquidity. We have taken a number of steps in this regard, and we will continue to monitor the evolving liquidity and financial market conditions and proactively take appropriate measures. I repeat, proactively take appropriate measures to ensure orderly liquidity conditions as may be required for the system. And when I say liquidity, it means not only transit, overnight liquidity, but also durable liquidity to meet the requirements of the system. I now come to financial stability. The system level financial parameters for the scheduled commercial banks continue to be healthy. The credit deposit ratio for the banking system at the end of January 2025 was at 80.8%, broadly similar to that on 30th September 2024. Bank liquidity buffers are sufficient, though the net interest margin moderated, return on assets and return on equity are robust. The system level parameters for NBFCs too are very healthy. I also take this opportunity today to mention that the Reserve Bank has been observing Financial Literacy Week annually since 2016. This is with the purpose to enhance financial education in our country. Last year too we did this campaign. This campaign was focused last year on empowering youth adults. This year, recognizing the critical and multifaceted role of women in society, this campaign will emphasize on women's role in financial decision making and household budgeting. I sincerely urge all banks to actively participate in this campaign on the theme Financial Literacy, Women's Prosperity. It starts from 24th of this month. Now, before I conclude, I shall be announcing some additional measures. Necessary directions and circulars for these shall be issued separately. First of all, on digital security, the rapid digitalization of financial services has brought convenience to all of us, at the same time efficiency, but it has also increased exposure to cyber threats and digital risks, which are again getting sophisticated day by day. The surge in digital frauds is a matter of concern. It warrants action by all stakeholders. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system.
introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. Second, the Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. The banks and NBFCs, I would urge them to also continuously improve preventive and detective controls to mitigate cyber risks. They must develop robust incident response and recovery mechanisms, reinforced through periodic testing for operational resilience. Third measure that I am announcing today, over the past few years, we have expanded the suite of interest rate derivative products available to market participants to manage their interest rate risks. We shall now, to this suite, include forward contracts in government securities. This would facilitate long-term investors, such as insurance funds, to manage their interest rate risk across interest rate cycles. It will also enable efficient pricing of derivatives that use government securities as underlying instruments. Fourth, to enhance access of retail investors to government securities, the Reserve Bank has taken a number of steps earlier. There's another step, that I am announcing today. And आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव सुन रहे हैं। बहुत बड़ा ऐलान, 5 साल बाद घटाया है रेपो रेट, जिससे लोन चुकाने वालों को बड़ी राहत मिली है। मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता। मनोहर, 5 साल का इंतजार पूरा हुआ है लोन चुकाने वालों का, अब सस्ती होगी ईएमआई? देखिए, एक बड़ी खबर है क्योंकि 5 साल के बाद, जब कोरोना काल में मई 2020 में रेपो रेट कम था, उसके बाद जब यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद लगातार रेपो रेट बढ़ता चला गया और इसका असर सीधे तौर पर आम जनता की जेब पे पड़ा था। जिन्होंने होम लोन देखा, जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें तो जो व्यक्ति करीब 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है, उसको करीब 450 रुपये पर मंथ का फायदा होगा, मतलब उतनी ईएमआई कम लगेगी। अगर 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है तो करीब 750 रुपये के आसपास जो है उनकी ईएमआई कम लगेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि 0.25 बेसिस रेपो रेट में कमी की गई। 0.25% की कटौती आरबीआई ने रेपो रेट में की है, यानी कि 6.5% से घटकर 6.25% तक ये दर पहुंची है। ऐसे में मनोहर, अगर आसान भाषा में इसे कहें या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाना चाहें, कितनी छूट मिल जाएगी लोगों को अब ब्याज में और कितनी सस्ती हो सकती है ईएमआई? देखिए, बिल्कुल उसी की चर्चा मैं कर रहा था और अपने दर्शकों को बता रहा था कि संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के नए गवर्नर हैं, उन्होंने ऐलान किया है और 5 साल के बाद बड़ी राहत दी है। अगर कोई आम आदमी 20 लाख रुपए का अगर उन्होंने लोन ले रखा है तो उनको जो राहत मिलने वाली है वो करीब जो है 450 रुपये प्रति महीने की मिलने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें 50 लाख रुपए का अगर कोई किसी ने होम लोन ले रखा है तो करीब 750 रुपये के आसपास उनकी ईएमआई में कमी आ जाएगी। तो ये राहत वाली बात है। और पर्सनल लोन में भी देखिए, अगर किसी का 10% पर्सनल लोन है, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो 9.75 का उनका लोन पड़ेगा, तो उसमें राहत मिलेगी। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। अब आप देखिए
मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ नहीं। कुछ अभी बजट सेशन खत्म हुआ है, बजट सेशन में 12 लाख रुपए का टैक्स नो टैक्स का ऐलान किया गया है। अब आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कमी की है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी आए, क्योंकि हमारी मुद्रा स्फीति की दर देखते हैं वो अभी कम हुई है। उसके बाद सरकार ने ये राहत दी है। हाँ। जी कह सकते हैं मनोहर कि ये जो हफ्ता है ये मिडिल क्लास के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा। आप जब बजट में 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया और अब ये जब